raw pointers with smart pointers so that you can really play around with it. The best way to understand pointers or even smart pointers is just to play with them, to create examples, to try them out, make mistakes, understand why this doesn't work. You'll try to copy a unique pointer and it won't work, and you go, oh yeah, of course you can't copy unique pointers. So this is the idea, is just to play with this and get more experience using it. So that's what this challenge is all about. In this challenge, we're going to create a real simple main that's going to instantiate a vec pointer, and I'll show you this vec pointer right here, and then I'll talk about the challenge in more detail in a sec. But let's just get an overview of what's going on here. You can see here's my main, and these are the 3 function prototypes, and you'll have to implement those 3 functions. But let's talk about the main first. Main has vec pointer. Okay, so here's vec pointer. And what does vec pointer look like? Well, vec pointer is on the stack, and it is, and this may look a little complicated, this declaration here, but break it down into pieces and it'll make a lot of sense. Vec pointer is a unique pointer. Okay, so it's an object, and this is on the stack here. So what is a unique pointer? We know what a unique pointer is, right? A unique pointer is basically an object that manages a raw pointer. And in this case, it's a unique pointer. So I'm pointing somewhere. Where am I pointing? Well, I'm pointing to a vector. All right, so here's my vector. Remember, a vector can have multiple elements. So here's my vector. Now notice everything over on this side is on the heap, right? All of this stuff is going to be on the heap. The only thing that's on the stack is that vec pointer right here. So now we've got a vector. Okay, I know what that is. But what does the vector contain? Well, the vector elements are shared pointers. So each one of these guys is going to be a shared pointer, right? So I'll just put SP here so you know what I'm talking about. So what's a shared pointer? Well, a shared pointer is an object. And the shared pointer in this case manages a test object. And we've got a test class right up here. Same one we've been using in this section. So this guy now has a test object that it's managing. And this guy is managing a test object and so forth. So this looks pretty complicated. And it's not that complicated when you really break it down like that. Again, all we've got on the stack is a vec pointer. That points to a vector on the heap. That vector contains shared pointers. And those shared pointers refer to test objects. Okay, so how are we going to do this? Well, we're going to do this really easily because the vector and the test class, the unique pointer class, and the shared pointer classes really do most of the work for us. And we're going to do this with no news and no deletes. Okay, we're not going to use new, we're not going to use delete. We're going to use make shared, make unique, and let the destructors be called automatically when the reference counts go down to 0 or when the unique pointer goes out of scope. So this is going to make our memory management really, really simple. We're not going to work with raw pointers at all.
All right, so that's the big picture. So now what are we doing? Let's walk through this main. I'm going to clear this out real quick, and let's walk through our main one step at a time here. So here we've got a vec pointer. That's just going to create that object on the stack. It is not creating that vector on the heap. We need to do that ourselves. So again, that vec pointer is just that simple unique pointer object on the stack. In order to create that vector that we're pointing to, we need to call this function make, and that's this function right up here. There's the function prototype right here. You can see make right over here. Again, this looks really complicated, but it's pretty straightforward again. What are we returning from make? Well, we're returning a unique pointer to a vector of shared pointers that manage test objects, right? So inside make is where we're going to use make unique. We're going to actually create that unique pointer and make it point to that vector. Okay, once we've got that, we're going to ask the user, how many data points do you want to enter? And let's say they type in 3. We'll read that into num, and then we'll call fill. And look what we're passing into fill. We're dereferencing vec pointer. Well, what is vec pointer? Vec pointer is a unique pointer to that vector. So when I dereference vec pointer, I get the vector that it's pointing to. So I'm calling fill with the vector and the number of elements. And you'll notice that here's fill right here. And all fill is going to do is it's going to loop as many times as the user wanted, in this case 3, and it's going to say, so what's the first integer you want to enter? You'll type in 10. What's the second one? 20. What's the third one? 30. And for each one of those integers that the user enters, we're going to create a shared pointer to one of those test objects with that integer they entered right here, and we're going to put that on the vector using pushback. That's it. Now we'll call display. Notice again we're dereferencing vec pointer. That gives me the vector, and display is right here on line 69. And all we're doing in display is we're just iterating through that vector of shared pointers and displaying whatever data those test objects hold. Sounds complicated. It's not so complicated. You just need to break it down into little pieces and take them one step at a time. Let me run this for you so that you can see what the output looks like, and I'll run it based on my solution here. And let's build and run. So the first thing it says is I'm going to just slide this over here so you can see the actual code next to it. So here's my main right here. How many data points do you want to enter? Let's say I want to enter 5 data points. Enter data point 1. Now, we're in that fill method. The fill method is one that's going to loop 5 times in this case, each time asking me for what data I want. It's going to make shared, right, and create that shared pointer to that test object that has whatever I type in. So let's say I want to type 10. Now you'll notice that over here on the right, we've got test constructor. That's just a little debug statement that I put in there to help you out. It's being indented so that you can see it. So what's happening here is we've just created a test object with a 10, which is what the user typed in. So let's create another one, 20. Remember, we're going to get 5 of these, so we'll do 30, 40, and 50. So at this point, our fill is done. Now we're going to display all those elements in that vector. So when I press enter now, that will be called display, and it'll display everything. There we go. It says display vector data, 10, 20, 30, 40, 50. Now look what happens. Test destructor, 10, 20, 30, 40, 50. Again, I've got a little simple print statement in the destructor for the test class, and you can see that these objects are being cleaned up off the heap, which is really cool. So no deletes necessary because we're using smart pointers, and this is the output that you should get from this main once you implement those functions. So there you go. It's up to you now. What you need to do again is implement make, fill, and display. And if you scroll up just a little bit here, and it's also in the description text, it tells you a little bit more about what those functions should do. So again, the function make, it creates and returns a unique pointer to a vector of shared pointers to test objects. The fill function expects a vector of shared pointers to test objects and the integer for however many numbers the user wants to enter. And it prompts the user and creates those shared pointers as it goes. And then the display just displays everything in there. And if you look at the function prototypes that I provided, and you can change these to whatever you like. If you want to try it without the ref, with the ref, const, non-const, try it out, change them around and see what happens. But these are the function prototypes I'm giving you. You can see that make expects nothing and returns a unique pointer. In this case, fill expects a ref to a vector. Now this one has to be a ref, right? It can't be by value, otherwise you won't add anything to the vector. And it can't be const because we actually need to change that vector. But display should expect a ref and it should be const. So in this case, I want to be efficient and not copy that vector. And at the same time, I don't want to change it accidentally. So there's my const. All right, that's it. Good luck, have fun, play around, change these prototypes if you like. Use the debugger. I'm sure that'll help you a little bit when you're trying to learn this stuff. So those are the 3. You shouldn't have to change the main, and you should get the same output as I did. We'll come back to the next video and we'll do the challenge solution, and you'll see that it's actually pretty straightforward. It's real nice to be able to have C++ manage all this stuff for us using smart pointers. Welcome back to the challenge 1 solution for section 17. What I'll do now is I'll write these 3 functions, and we'll do it together and we'll explain it as we go. The first one is the make function. That's the one that creates that unique pointer. And the way we do that is we use make unique. Now obviously we need to return it. So we'll say return std make unique. And what are we making? Well, we're making a vector. And the syntax is going to look kind of weird here, but we just have to deal with it because that's just the way it is. And it's not that hard once you break things up together, as I said. So we're returning a unique pointer to a vector, right? And that vector is of std shared pointers to test objects. And we'll have 3 greater than signs here to close that up. And then what we need to do is we need to call the constructor for that vector. That's it. That's all we really need to do here. Now we'll clean this up in a second. We'll make this even better than it is here. But that's one liner. That's all it's doing. We have to make that unique pointer. Remember, down here on line 89, we've got a constructed unique pointer, right? But it's not pointing anywhere yet. That's what we're doing here. Now we're actually creating that vector. All right, so now there's the fill. How do we do the fill? Well, the fill expects that vector. So it's pretty straightforward. I just need to read that integer from the user for each iteration, right? So we need a temporary variable here. Let's just call that temp. That's what we're going to read into. And now we're going to loop. How many times are we going to loop? We're going to loop num times, however many numbers the user wants to enter. So we'll say for int I equals 1. We'll start at 1 and we'll go I less than or equal to num. And we'll increment I each time. So that's my loop. We're going to use a for loop here because we know exactly how many times we need to loop. We need to loop num times. So what do we do here? Let's prompt the user. So we'll say std cout. And we'll ask the user to enter data point. And we'll just give them a little number here so that's easier for them to understand which one they're putting in. So we'll say std cout. And we'll ask the user to enter data point. And we'll just give them a little number here so that's easier for them to understand which one they're putting in. And we'll just surround that in brackets like that.
That's it. And then what we'll do is we'll read, and we'll just give them a little number here. So vector, that hard once you break things up together is of stood shared pointers to test objects. And we'll have 3 greater than signs here to close that up. And then what we need to do is we need to call the constructor for that vector. That it is here. But that's what we really need to do here. Now we'll clean this up in a second. We'll make this even better than it is here. But that's one liner. That's all it's doing. We have to make that unique pointer. Remember, down here on line 89, we've got a constructed unique pointer, right? But it's not pointing anywhere yet. That's what we're doing here. Now we're actually creating that vector. All right, so now there's the fill. How do we do the fill? Well, the fill expects that vector. So it's pretty straightforward. I just need to read that integer from the user for each iteration, right? So we need a temporary variable here. Let's just call that temp. That's what we're going to read into. And now we're going to loop. How many times are we going to loop? We're going to loop num times, however many numbers the user wants to enter. So we'll say for int I equals 1, we'll start at 1, and we'll go I less than or equal to num, and we'll increment I each time. So that's my loop. We're going to use a for loop here because we know exactly how many times we need to loop. We need to loop num times. So what do we do here? Let's prompt the user. So we'll say stood cout, and we'll ask the user to enter data point, and we'll just give them a little number here so that's easier for them to understand which one they're putting in, and we'll just surround that in brackets like that. That's it. And then what we'll do is we'll read from cin into temp. So we're going to do that 3 times, 5 times, 10 times, however many times they want. Now what we can do is we can create our shared pointer. So we can do this in a couple of different ways. Let's do it 2 ways. Let's do it in 2 steps, and then we'll do it in 1 step. So what we need to do is we need to have a variable here, and it's going to be a shared pointer to a temp object. So my template parameter is temp. And what do we call this? Let's just call it PTR. This variable name could be anything. And we're going to use stood make shared. Again, test. And what are we going to construct it with? Well, we're going to construct it with data or temp, whatever the user entered. Now that we've got that pointer, remember we have a vector of shared pointers. We just created a shared pointer. So all we need to do now is just say vec.pushback, and we're going to push back the pointer. That's it. We're done. So that's exactly what's going on here. And we're going to loop that many times, for each iteration, create that shared pointer, instantiate that test object, and that's it. Now, rather than doing 2 steps like this, let's just do it in 1 step because it's much more efficient to use move semantics. So let's just say vec.pushback, and right in here we'll just say stood make shared. Right, so that's going to create that R value, and the R value ref will be moved over. So test and temp. All right, so again, 1 simple statement. And now the last thing we need to do is display this vector. So I've already got the header information here with the 2 couts. And what do we do here? Well, let's just we're going to iterate through that vector. And for each iteration, all I want to do is just say stood cout, and we want to print the pointer's data, right? So we need to dereference that pointer and get its data. Something like that, and then an end line. And that should do it. Let's compile this. And there's our run. Let's say 2, 4, 6, 8 to enter 10. And that should do it. Points do you want to enter? Let's say I want to enter 10 data points, and they'll be, and then you can see that our data is being cleaned up automatically. Our test objects are being destroyed. We're cleaning this up just a little bit here. Remember, we can allow the compiler to deduce our types for us, so we can really clean this up a little bit. Since the compiler knows exactly what we're returning right here, we can simply replace this whole piece right here to auto. We'll just say auto right here. Let the compiler figure out what the type of that return value is, and it knows it based on this. And we can also change it up here in the function prototype. Get rid of all of that, and just replace that with auto. So we can replace this entire return type right here with auto. And now if we build again, we get the same compile, we get the same run. So let's put 3 data items in here, and we'll start destroying those objects. Pretty simple. No news, no deletes, not worrying about who needs to delete what. And that's it. That's the solution. Don't worry, just keep adding to what, dereferencing what to get what. It's just a little process that takes time to learn.
I knew I was underwater. But you don't have to put this in explicitly. You can leave this out and the compiler is going to deduce your return type by itself. After all these things, you have to put in a pair of curly braces, and inside these curly braces, we're going to have our function body, and we can do whatever we want our lambda function to do in this function body here. After this, you will have to remember to put your semicolon to make whatever statements contain बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर के अंदर हमें लॉट ऑफ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिया। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स की बाइनरी फॉर्म के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं अपने बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। इसे हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं। अब बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड के काफी used in bit level programming. Knowing binary is important for this topic, so if you don't know how binary works, I would recommend skipping to the next topic, but if you're comfortable with binary, well, this video is for you. So let's begin. I'm going to discuss 5 different bitwise operators: AND, OR, exclusive OR, left shift, and right shift. Let's create 3 variables, x, y, and z. X will equal 6, y will equal 12, and z will store our result, and we will set that to be 0.
So I'm going to give you the binary representation of each of these numbers. So 6 is this number. So we have 8 bits, that's a byte. And this is the binary representation of the number 6. 12 would be this binary number. And 0 is easy. That would be all zeros. So let's use the AND bitwise operator. So what we're going to do, so imagine equal to, let's use the AND bitwise operator. So what we're going to do is set z equal to x and y. So imagine this. Imagine that we're aligning all of these bits in columns. Using the AND bitwise operator, we're going to look at our operands x and y. If both of these are a 1, we will assign 1 to our result. And let's begin with the first column on the right. Both of these are zeros, so our result will stay at 0. Operator is column 2 are 0. So this binary number is the binary representation of, let's print z. So let's test that. Is the binary representation of the number 4. So let's test that. Z equals x and y. And let's print z. And equals, we're displaying an integer. I'll add a new line. Or, yep, our result, z, y, or is represented z equal to x or y, or is represented by a single vertical bar. And we will print, or. Let's try and guess what z is going to be before we actually display it. With the OR bitwise operator, only one of these bits needs to be 1 in order for us to assign 1 to the result. So since these are both 0, this will stay as 0. And the rest are just 0. So this is the binary representation of the number 14. And let's see if z is equal to 14. Yep, we got that right. So let's set this back to 0. Now with exclusive OR, that is represented by a caret. With exclusive OR, only one of these bits can be 1. If neither or both of these bits are 1, we don't assign anything. So both of these bits are 0, they will stay as 0. We have one of these bits as 1 and not the other, so that counts as 1. Now with this next column, both of these are 1, and using exclusive OR, only one of these can be 1. So since these are both 1s, we do not assign anything, so we keep that as 0 to 10. And let's test that. Z equals x. Yep, z is equal to 10. Now here's, and then left shifting these bits one spot to the left, and then adding 0 at the end. And this is the binary representation of the number 12. Actually, it's the same as y currently. These binary numbers are the same. Yep, and if I shift left twice, well then we are just moving these bits one more space. And now this is 24. There you go. So you probably noticed that there's a pattern. Every time we shift a binary number to the left, it effectively doubles. Now let's right shift. So let's copy this, paste it, and we will use 2 right angle brackets. And this is shift right. And let's set this to 6. If we're right shifting, we shift these bits one spot to the right, and this is the binary representation of the number 3. And if I print this, after shifting right once, our result z is 3. Every time we shift right, we're effectively cutting our number in half. Now if I shift right again, we will shift these bits one more spot to the right, and we are going to truncate this 1 at the end. And this will give us 1. That is the binary representation of the number 1. So technically, operators, they are special operators used, save that for operators in C.
Hi everyone and welcome to my channel. In this video I want the expression. So again, why would you use this approach here instead of the one that I just deleted? Well, it's cleaner code, it's easier to read, and it keeps everything in the same place. So everything that you need is here in this line of code. And in case that you wanted to write and use this function again, you would probably retype it anyways because it's very simple, it's a very trivial function. And Hi everyone and welcome to my college, and today's session is regarding the strategy for GSOC 2025, which is Google Summer of Code. Now we have multiple students who've gotten selected in GSOC in past few years, both from YouTube as well as paid batches, and this is literally one of the most demanded videos on YouTube from our students, and that is why we decided to make this session. अब आज के सेशन में we are going to talk about a lot of different things, including what exactly is GSOC, GSOC की timeline क्या होती है, किस तरीके से हमें organizations को select करना है, how do we exactly write our proposal, what are the things which increase our chances of getting selected into GSOC, and throughout the session we'll also get to see different tips and tricks from students who've already been selected in GSOC. So the best thing that I like about Google Summer of Code is that यहाँ पर हमारी ब्रांच मैटर नहीं करती, हमारी डिग्री मैटर नहीं करती, हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते, हमारा कौन से ईयर ऑफ कॉलेज है, कौन सा सेमेस्टर है वो मैटर नहीं करता. अगर हमारे पास स्किल्स हैं and if we are ready to put in the hard work, then we stand a good
chance of getting selected into this open source program, which is run by Google from the past 19 years. तो जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नहीं पता, GSOC एक open source program है जिसमें Google different organizations को invite करता है जो अपने projects लेकर आती है and students को invite करता है ताकि वो उन projects के अंदर contribute कर सके. And ये जो entire contribution होता है, it is around 12 weeks and it is very similar to having an internship. अब GSOC के अंदर there are 3 different types of projects जो organizations लेकर आती हैं. Small projects, medium projects and large projects. Depending upon the project size, हमारे hours of commitment differ करती हैं and हमारा stipend भी differ करता है. For small projects, generally India के अंदर the stipend is $700, for medium projects is $1,500 and for large projects is $3,000. अब this stipend is around 2.4 lakhs, which definitely catches the fancy of most students, but stipend should not be our primary objective for preparing for GSOC. Primary objective GSOC के अंदर apply करने का हमारे लिए होना चाहिए सबसे पहला तो the kind of opportunity that it brings, it's a really good program to be part of, and secondly the experience that it gives you. We get Hi everyone and welcome to Pune College, and today's session is regarding the strategy for GSOC 2025, which is Google Summer of Marks matter नहीं करते अंदर contribute कर सके. Is the timeline of the program. अब we repeat करती हूँ that Google Summer of Code is not सबसे पहला तो the kind of opportunity that it brings, it's a really good program to be part of, and secondly the experience that it gives you. We get the opportunity to work in a good project with good developers around the world. तो वो काफी unique opportunity है जिसके लिए definitely हर एक student को कॉलेज में कम से कम एक बार तो try करना ही चाहिए. अब आगे बढ़ने से पहले there is one more message जो मैं हर बार GSOC के अंदर repeat करती हूँ that Google Summer of Code is not about competition, it is about collaboration. Definitely the stipend is good, but stipend temporary है tech के अंदर, but जो experience हमें मिलेगा that experience is going to be very 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 permanent. तो GSOC की बात करते हैं. GSOC के अंदर सबसे primary चीज जो हमें ध्यान रखनी है that is the timeline of the program. अब we can go and visit this link to view the entire timeline of GSOC. ये GSOC 2024 यानी इस ईयर की टाइमलाइन है. हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम 2025 के लिए कर रहे हैं. अब पूरी टाइमलाइन के अंदर 3 डेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला द अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. जनरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स जो GSOC के अंदर इस साल आने वाले पार्टिसिपेट करने के लिए वो 2025 के अंदर फेब एंड के अंदर बताए जाते हैं. तो फरवरी एंड के अंदर हमें पता चलता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. फिर लगभग हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोजेक्ट्स को और डीप में स्टडी करते हैं, उनका कोड बेस समझने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इश्यूज एंड नेटवर्क विद द मेंटर्स. उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दैट इज टू सबमिट आवर प्रपोजल. प्रपोजल इज द डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आफ्टर पिकिंग द प्रोजेक्ट हमें अपने बारे में बताना होता है एंड वी हैव टू टेल व्हाट आर आवर प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट दैट वी वांट टू डू इन द सम. अब जनरली प्रपोजल सबमिट करने के लिए हमें काफी टाइम मिलता है व्हिच इज फ्रॉम मार्च एंड टू अप्रैल स्टार्ट. एंड फिर आती है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट व्हेन द कंट्रीब्यूटर्स आर अनाउंस्ड, यानी मेक के अंदर हमें बताया जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस साल के लिए सिलेक्टेड हैं और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस साल GSOC प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम
Hey, what's up guys? My name is Eterno. Welcome back to another C++ video. It's been ages since the last one. I'm gonna get back into it now though. Dynamic casting, that's what we're gonna be talking about today. If you guys don't know what casting is in general in C++, I've got a video about that, so definitely check that out and familiarize yourself with that. Before you move on to this video. If you're not familiar with the type system in general, I have a few videos about that as well, because casting is to do with types. Casting is a way for us to convert between the types that we use in C++, so you need to make sure that you kind of understand how the type system works. That C++ kind of gives us as a way to protect our code, but it's not something that we have to necessarily stick to or use, because we can freely cast between types of any types, like if we so choose. But dynamic casting is provided to us as somewhat of like a safety net, really, for when we want to do a specific type of casting. Now, I've gone through kind of C++ style casts. There's two kind of ways to cast. There's the C style cast, which is just when you write your new type in brackets before a variable. But then there's also the C++ cast that only works function. It's an entity pointer, right? It's an entity instance. It's an instance of an entity object, right? So what is Size 6 and December bands.
Hi. काम करेंगे। अब इस एंटायर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। लॉट ऑफ बिगिनर्स थिंक कि ऑफिशियली अगर प्रोग्राम फरवरी के अंदर स्टार्ट होगा, देन वी स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग और लर्निंग स्टफ इन फरवरी। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड इन GSOC स्टार्ट देयर प्रिपरेशन वेरी अर्ली ऑन। सबसे पहला स्टेप ऑफ स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर GSOC और फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनी काइंड ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इज टू लर्न समथिंग ऑन आवर ओन फर्स्ट। मेजॉरिटी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के मेंटेनर्स होते हैं, दे डू नॉट लाइक हैंड होल्डिंग। उन्हें पसंद है कि कोई व्यक्ति आए जिसको ऑलरेडी कुछ चीजें खुद से आती हो एंड दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन एन इंपैक्टफुल वे। तो बेसिकली कंट्रीब्यूट करने के लिए पहले हमारा कुछ टेक्नोलॉजीज के ऊपर चीजों के ऊपर अच्छी पकड़ होना जरूरी है। तो हमारी जो GSOC 2025 की तैयारी होगी वो आइडियली कई महीने पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो अक्टूबर एंड नवंबर आर गुड मंथ्स टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन जर्नी इज टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, PHP, जावा आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस जिनके साथ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एंड इन फैक्ट दीस आर लैंग्वेजेस जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट GSOC के अंदर यूज करते हैं। बट इसके अलावा भी अगर हमारा इंटरेस्ट C++, पर्ल जैसी लैंग्वेजेस के साथ अलाइन करता है तो वी कैन आल्सो गो एंड लर्न दोस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट डेटा साइंस की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ इंक्लाइन होता है या हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज की तरफ इंक्लाइन होता है। तो GSOC के अंदर इस तरीके के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं व्हिच आर डेटा साइंस हेवी और व्हिच आर हार्डवेयर हेवी। तो इफ यू आर समबडी जो मेनस्ट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं बट नीश टेक्नोलॉजीज के अंदर इंटरेस्टेड है तो देयर विल बी समथिंग और द अदर जो हमारे लिए होगा GSOC के अंदर। तो हम उन चीजों के अंदर भी जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई और टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो उसकी हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि हमें हेल्प करेगा GSOC के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कोड बेस को भी समझने में। नाउ इफ यू आर बिगिनर हु स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच लैंग्वेज टू पिक, तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपके लिए रहेगी कि या तो जावास्क्रिप्ट को पिक कर लेना या पाइथन को पिक कर लेना, क्योंकि ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर मेजॉरिटी GSOC प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारे लिए जब डन हो जाता है तो हमें सेकंड स्टेप करना है व्हिच इज टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन आवर ओन। अब खुद के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिल्ड होते हैं। एंड दिस इज रियली फंडामेंटल। एक कॉमन मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामर्स यहां पर कमिट करते हैं दैट इज कि हमने बस सिंटैक्स सीख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड फिर डायरेक्टली जाकर हम किसी और के कोड बेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिस्टेक इसलिए क्योंकि जब तक हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी और जब तक हमें खुद के प्रोजेक्ट बनाने नहीं आते होंगे तब तक दूसरों के कोड बेस को अंडरस्टैंड करना हमेशा डिफिकल्ट ही रहेगा। व्हाइल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वी कैन स्टार्ट विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, धीरे-धीरे हम उसका स्केल इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ थर्ड एंड क्रूशियल स्टेप इन द प्रिपरेशन जर्नी इज टू लर्न अबाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम GitHub, GitLab बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जिनके बारे में सीख सकते हैं। मेरी आपको पर्सनल एडवाइस होगी दैट यू स्टार्ट विद Git एंड GitHub क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हमें यही मिल रहे होंगे एंड इनके हमें काफी सारे अच्छे रिसोर्सेज भी रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे। जब हम कह रहे हैं कि हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना है तो उसका मतलब है कि हमारी Git एंड GitHub की अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें ब्रांचेस के बारे में, वर्जनिंग के बारे में, कमिट्स हो गए, पुश हो गया, पुल हो गया, इन सारी चीजों की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए एंड ये सारी चीजें हमें हैंड्स ऑन करके देखनी है। अब रिगार्डिंग वर्जन कंट्रोल हमने ऑलरेडी अपना कॉलेज के ऊपर Git एंड GitHub का कंप्लीट ट्यूटोरियल डाला हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम दैट। एंड उसके अलावा जो मेजॉरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया है उनके भी वन शॉट्स आर अवेलेबल ऑन दिस YouTube चैनल। नाउ द फोर्थ स्टेप इन द प्रिपरेशन जर्नी इज टू हैव सम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस। या तो हम डायरेक्टली GitHub पर जा सकते हैं, वी कैन पिक सम रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, सम रैंडम प्रोजेक्ट एंड उसके ऊपर हम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर हम GSOC की प्रीवियस ईयर ऑर्गेनाइजेशंस को देख सकते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई एक पिक कर सकते हैं एंड उन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स पर काम करना, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। And learn GSOC from one of your videos. What is GSOC? How to crack it? I was not open source contributor until yesterday. After seeing your video, I learned what hacker face, what is hacker face, how to open source and contribute. So the organization list published in GSOC website. I just go through their past contributors, how many contributors they do, what were the previous projects, and what were the tech stack. So after that, the organization aligned to my tech stack. I selected those and I gone through their issue. I studied their project structure and repository. Then I started my contribution. If you want to know about previous year organizations तो हम इस लिंक पर जा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ जाएंगी जिन्होंने लास्ट ईयर GSOC के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब हम चाहें तो रैंडमली किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर सकते हैं एंड वी कैन विजिट देयर प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोजेक्ट बाय फॉस एशिया। अब हर प्रोजेक्ट के अंदर जनरली हमारे पास कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। इफ वी आर अ बिगिनर जो फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स में जब हम इश्यूज के अंदर जाते हैं तो हर इशू के साथ कुछ ना कुछ लेबल अटैच्ड होता है एंड लेबल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेबल्स होते हैं जो बिगिनर्स के लिए दिए जाते हैं। यानी कुछ इश्यूज हैं जो स्पेसिफिकली बिगिनर्स को ही असाइन किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑन दिस प्रोजेक्ट देयर इज अ लेबल कॉल्ड गुड फर्स्ट इशू एंड अ लेबल कॉल्ड न्यूबी फ्रेंडली। तो बेसिकली जिन भी इशूज के साथ ये पर्टिकुलर लेबल्स अटैच्ड होते हैं वो ऐसे इशूज हैं जिनके साथ बिगिनर्स को स्टार्ट करना चाहिए। सो इफ यू आर अ बिगिनर हम प्रीवियस GSOC की ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, उनके कोड बेस को समझ सकते हैं एंड उनके अंदर जो बिगिनर फ्रेंडली इशूज हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये इश्यूज तो मैटर करते ही हैं पर GSOC के अंदर इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ सिलेक्शन तो हमें हाई इंपैक्ट वाले इश्यूज को टारगेट करना है। वो बेसिकली कोई फीचर रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई एनहांसमेंट हो सकती है, कोई बग फिक्स हो सकता है, पर बेसिकली अपने कोड बेस के अंदर हमें ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करनी है जो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करें एंड मेंटेनर्स को इंप्रेस करें। बिकॉज हम जो PRs क्रिएट कर रहे हैं उनका इंपैक्ट जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड होंगे। इसीलिए एज अ बिगिनर हम स्मॉल कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं पर लॉन्ग टर्म के अंदर अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमें मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे। वहां पर सिर्फ रीडमी फाइल को चेंज करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। There are multiple issues. You have to look at issues assigned to someone or not. If it is assigned to someone, wait for a few days. Then you can assign this. If the issue is not assigned to you, you can directly ask question it to you, and you can add more features to that project. Adding features will be a plus point. अब these were the 4 steps जो हमें कंप्लीट करने हैं बिफोर द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ GSOC। क्योंकि ये चारों चीजें अगर हमने ऑलरेडी कर रखी होंगी तब हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस पहले से होगा जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन अ पॉजिटिव मैनर जो एक्चुअली उस प्रोजेक्ट को हेल्प करने वाला है। स्पेसिफिकली फॉर GSOC देयर आर 2 थिंग्स दैट वी नीड टू। सबसे पहला पिकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज कनेक्टिंग विद द मेंटेनर्स। पिकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले बात करते हैं। ये ऐसी चीज है जिसको मैंने लास्ट ईयर भी कवर किया था डिटेल के अंदर। बेसिकली वी कैन इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बाय पिकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मंथ्स इन एडवांस। एंड हाउ डू वी डू दैट? GSOC के ऊपर हमारे पास ऑफिशियल लिस्ट अवेलेबल होती है कि प्रीवियस कितने सालों में कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो GSOC के अंदर आई है एंड कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल अपने प्रोजेक्ट्स GSOC के अंदर लेकर आती है। सो बेसिकली अगर इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम पिक करते हैं और उस पर कंट्रीब्यूशन हम कुछ महीनों पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं तो वी हैव अ बेटर चांस ऑफ शोकेसिंग आवर स्किल्स, मेकिंग मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस एंड हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। यहाँ पर डाउनसाइड किया जाता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स भी यही सेम चीज कर रहे होंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है GSOC के अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उन्हीं के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एंड दैट इज व्हाई द कंपटीशन फॉर द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज अ लिटिल बिट हाई। तो यहाँ पर हम अपने लिए प्रेफरेंस ले सकते हैं कि जब भी हम पास्ट ईयर में आने वाले ऑर्गेनाइजेशन को पिक कर रहे हो तो डोंट स्टिक टू जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू पिक 2 to 3 गुड ऑर्गेनाइजेशन और उनके भी ऐसे प्रोजेक्ट पिक करने जिनमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है। जितना हमारा इंटरेस्ट होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर उतना बेटर तरीके से हम उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एंड उतना हमारे अंदर जीरो होगी उसके ऊपर काम करने के लिए। दूसरा GSOC के अंदर कभी कभार ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग। तो
कभी-कभी अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो दैट आल्सो लीड्स टू हायर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। The organization is really going to come that year. If you go and check in the GitHub, तो एक सेक्शन बना होगा repository की GSOC 2024 या GSOC 2025 that you can if you actually search properly आपको मिल जाता है क्योंकि मुझे भी मिला था वो GSOC ने मार्च में किया था कि नेक्स्ट ईयर सब आने वाला है बट बिफोर दैट आई न्यू कि ये दोनों आएंगे क्योंकि मैंने फरवरी में देखा उनके GitHub में देखा था कि they had a repository called GSOC 2024 और इसमें मेंटर्स और कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम रफली लिखा था। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है दैट इज बेस्ड अपॉन चांसेस ऑफ सिलेक्शन या फिर इंटरेस्ट। इसके अलावा एक और थर्ड क्राइटेरिया है जिसके अंदर वी कैन लुक इनटू बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट पार्टिसिपेट इनटू GSOC। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो GSOC के अंदर तो पार्टिसिपेट कर ही रही हैं पर उनके पास प्रोजेक्ट्स इतनी सारी टेक्नोलॉजीज इतनी सारी कि GSOC के अंदर इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन दीस ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है हमारे पास वहां पर एक लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप के भी चांसेस हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्रोमियम आ जाता है, ज़्यूलिप आ जाता है। सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं व्हिच आर GSOC स्पेसिफिक जहां पर लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप के उतने चांसेस नहीं होते। तो कई सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया अबाउट पिकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आर द अपॉर्चुनिटीज दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अपार्ट फ्रॉम GSOC। इसके अलावा सेकंड स्टेप होता है मेंटेनिंग गुड कांटेक्ट और कनेक्टिंग विद द मेंटेनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो भी हमारे प्रोजेक्ट के मेंटर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ टच में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन द ऑफिशियल GSOC पीरियड जब हमारे पास टाइम होता है टू एक्सप्लोर द कोड बेस एंड कंट्रीब्यूट टू द कोड बेस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन द एंटायर GSOC प्रोसेस इज टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट और ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं ये इंपैक्टफुल एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस होनी चाहिए। अगर GSOC के ऑफिशियल स्टार्ट से पहले यानी फेब से पहले वाले मंथ्स के अंदर या फिर हमारे प्रपोजल के सबमिट होने से पहले अगर हम अच्छे खासे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो जनरली उसके बाद जो प्रपोजल वाली स्टेज होती है वो सिर्फ नेम से के लिए होती है। वहां पर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर एंड इन्हीं स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर गेटिंग सिलेक्टेड बिकॉज़ इफ यू समबडी हु इज ऑलरेडी वर्कड ऑन द कोड बेस, इफ यू समबडी हु इज ऑलरेडी क्रिएटेड सम PRs, if you somebody who has already solved a lot of issues, तो definitely the maintainers are going to trust you to work on the project and definitely हम proposal के अंदर भी better suggestions दे पाएंगे regarding what kind of work we are planning to do। तो proposal submit करने से पहले projects के ऊपर contribute करना बहुत ज्यादा important है। I started contributing around November. By January, I think I had around 5 PRs merged, and after that, I was just sort of working on the proposals. इसके अलावा अपने मेंटर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना, टच में रहना काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू स्टक समवेयर देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प। कई बार प्रोजेक्ट्स के पास अपने स्लैक चैनल या दूसरे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं इन केस वी स्टक एनीवेयर। अब एक चीज यहां पर जरूर ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरीली एज अ बिगिनर जाकर मेंटेनर्स को पिंग करना है बिकॉज़ अननेसेसरीली ऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कनेक्टिंग बार-बार मैसेजेस भेजना कैन बी अ बैड स्टेप। हमारे लिए जो बेस्ट चीज होनी चाहिए कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें मेंटेनर्स के साथ जब एक्चुअली हम कहीं पर स्टक हो तभी वहां पर जाकर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस के अंदर एंगेज करना है, थोड़े से मीनिंगफुल हमें डाउट्स पूछने हैं एंड इंडिपेंडेंटली काम करने की ज्यादा कोशिश करनी है। हमें ऐसे नहीं सोचना कि मेंटेनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर सॉल्विंग ऑल ऑफ आवर बिगिनर लेवल डाउट्स। सो एंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, रिस्पेक्ट द मेंटेनर्स एज वेल एज योर टाइम। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके बाद होपफुली अगर हमने इतनी चीजें कर ली होंगी तो मेजॉरिटी केसेस में 80% एफर्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक अगर हमने ठीक नंबर कंट्रीब्यूशंस कर दिए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो GSOC के अंदर सिलेक्ट हो गया तो डेफिनेटली हमारे मैक्सिमम चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। इसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है दैट इज अबाउट सबमिटिंग द अब मेजॉरिटी ऑफ अच्छे कैंडिडेट्स के लिए जो प्रपोजल वाली स्टेज होती है दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। प्रपोजल को हमें अच्छे से क्रिस्प बनाना है, उसे हमें अट्रैक्टिव बनाना है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है ताकि एक मेंटर का उसे पढ़ने का मन करे। फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कुछ प्रपोजल्स के लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए सो यू कैन आल्सो चेक आउट फ्रॉम देयर। अब प्रपोजल सबमिट करने के बाद जो कॉमन मिस्टेक है जो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ही हम अपने कंट्रीब्यूशंस को बंद कर देते हैं एंड दैट इज जनरली नॉट अ पॉजिटिव थिंग। बेसिकली एक बार अगर हमने प्रपोजल सबमिट कर भी दिया पर उसके बाद में हमारे पास काफी टाइम होता है जब तक सारे के सारे सिलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो वो हमारे पास एक विंडो है टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट जहां पर हमें लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें फ्यूचर में और काम करने को मिल सकता है। तो अपने जो कंट्रीब्यूशंस है उनको रोकना नहीं है बिकॉज़ नो ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि आप GSOC के अंदर आके प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इसलिए कंट्रीब्यूट करो बिकॉज़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। दे वांट कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है उनके प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट के अंदर एंड दैट इज व्हाई यू आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू दैट इवन दो यू ऑलरेडी सबमिटेड द प्रपोजल। तो कीप योर कंट्रीब्यूशंस एंड PRs गोइंग बिकॉज़ होपफुली दैट विल गेट अस सिलेक्टेड फॉर GSOC 2025। सो दीस वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो जरूरी हैं GSOC 2025 के लिए। अब बिफोर साइनिंग आउट आई वुड लाइक टू टेल यू टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज मस्ट। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि ठीक है हमने आज का स्ट्रेटजी वीडियो देखी, हमें सारी चीजें पता चली, अब जाके हम चारों रोड मैप वीडियोस देखेंगे पर कोडिंग कुछ नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जाकर हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करें, जाकर अपने ओपन सोर्स स्किल्स को स्ट्रेंथन करें, गिटहब की अच्छे से नॉलेज लें एंड जाकर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट करें। उसका लिंक सिनेरियो टेक्नोलॉजीज टुवर्ड्स गेनिंग सम ओपन सोर्स एक्सपीरियंस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से रियल लाइफ में हमारी कंट्रीब्यूशन टॉपिक ऑनेस्ट फाइनेंसेस। आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने 20s और 30s के अंदर ऊपर के 1 से 2% लोगों में आना चाहते हैं। आज ये जो मास्टर क्लास है दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मास्टर क्लास ऑन द इंटरनेट फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज इन देयर 20s एंड 30s। ऐसा क्लेम मैंने आज से पहले पिछले 8 साल में नहीं किया, आज कर रहे हैं तो काफी कॉन्फिडेंस के बाद या काफी भरोसे के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज हम ऐसे मिथ्स ब्रेक करने वाले हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पे इतने टाइम से अवेलेबल थे। आज ऐसे इनसाइट्स आपको बताए जाएंगे, आज ऐसे पर्सपेक्टिव्स आपको बताए जाएंगे, इनसाइडर इनसाइट्स होंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने 20s और 30s के अंदर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए। कई सारी ऐसी मैं चीजें बताऊंगा जो काफी फीलिंग्स हर्ट कर सकती हैं लोगों की, पर उधर मेरा सिर्फ मैं एक लेंस आज मैंने पहन रखा है और लेंस वो है कि आप वो इंडिविजुअल हो जिसको ऊपर के 1 से 2% लोगों में आना है। लाइफ में सबकी प्रायोरिटीज अलग है पर आपकी वो प्रायोरिटी थी या कैसे मैं ऊपर के 1-2% लोगों में आऊं। मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, आई एम हसलर।
93% of developers use Git, which actually feels to me a little bit low, because 100% of the developers that I've worked with use Git. It's got a tighter grip on the version control industry than Google does on your personal data. In this video, the Primeagen is going to walk you through not one, but both of his Git courses. I'll try to keep this intro short because Prime does a better job of talking in front of the camera than I do, but I just wanted to let you know what you're getting into. Now, in each course, there are 11 chapters, which means 22 chapters in total. You'll learn how to set up Git, what repositories are, Git internals, Git configs, branches, how to merge, how to rebase, Git reset. You'll learn how to... There are 11 chapters, which means 20... I just wanted to let you know what you're getting into. Now, in each course, there are 11 chapters, which means 22 chapters in total. You'll learn how to set up Git, what repositories are, Git internals, Git configs, branches, how to merge, how to rebase, Git reset, what remotes are, how to use GitHub with Git, and ignoring files with gitignore. In the second half of the course, you'll learn how to fork a repo, how to use reflog, merge conflicts, rebase conflicts, squashing, stashing, reverting, cherry picking, Git bisect, Git work trees, and tags. It's a lot. The first half of this course, Prime's course number 1, is really all about learning how to use Git as a solo developer, and course number 2 covers all the stuff you need to know to use Git effectively in a team. Prime has spent over 8 months writing these courses, and the rest of the boot dev team and I have spent that same amount of time really helping to edit, test, and refine them. So I hope you enjoy them. But this is a very interactive course. I do not recommend sitting down and binging it in one sitting. There are interactive lessons and projects the entire way, so get your hands on the keyboard and actually follow along. In fact, I actually recommend that you take the course on boot dev and go ahead of Prime, and then watch him go through that same lesson so you can see his approach, his commentary, and his solutions after you've had a chance to experiment and challenge yourself and do it yourself. Now, all of the content in this YouTube video and all of the content on boot dev are completely free. There's no need to sign up for a boot dev membership to get value out of this course. That said, all of the interactive features on boot.dev are paid features. So if you want to be able to submit your own assignments, if you want to view solutions, chat with the AI chatbot, or get a certificate of completion at the end, you will need a paid membership for that. And you can actually use Primeagen's code, PrimeYT. That will not only help us at boot dev be able to produce more courses like this, but that also about Git. All right, we are now going to officially start the entire boot.dev learn Git. I'm gonna go through the course that I created. I wanna do it, and it's gonna be awesome. Here we go, we're gonna go through the course. We're not gonna watch the videos because guess what? This is my course. In 2005, after license disputes with BitKeeper, Linus Torvalds, creator of Linux, you may have heard of it, sort of runs the web, not a big deal, decides to write his own version control. He wrote Git in 5 days. And within a couple years, it became a widely used version control. And now, today, it is the de facto standard for all developers. I love this. This clearly is ChatGPT. Where's this guy even looking? Learn to code the slow way. All right, first off, I do want every last person here to know that this is a boot.dev sponsored article read. Wags Lane, as he is named inside this chat. Oh, so aptly named somewhere in here. He was just talking. At the end, we're doing it up front. All right, let's do that. And when you say you work at Netflix, you know what you get? Hey, you get a Linus Torvalds, creator of Linux, you may have heard of it, sort of runs the web, not a big deal, decides to write his own version control. He wrote Git in 5 days, and within a couple years, it became a widely used version control, and now, today, it is the de facto standard for all developers. To be clear, when I say Git, I don't mean an insult from across the pond, and I don't mean GitHub.
GitLab, Stash, or any of the others. All of those companies use Git. They are not Git. Git allows you to track code changes over time by author with a set of commands to search, manipulate, and revert history. In simple term, Git creates a commit. A commit is just a set of changes tied to an author, time of day, and other information. As many commits as you want can be added to the graph. At any commit, you can branch off and create new commits on the new line. Any of these branches can be merged into any other branch, including the main line. Commits can be squashed into